Hi everyone, welcome to LA Tutorials. Okay, we were studying chapter 1 biology. The topic for the day is root pressure. अच्छा, now what is root pressure? See, हमारे जो roots होते हैं plant के, they have root hairs. These all concepts we have already understood in the earlier session. ठीक है? तो ये root hair जब water absorb करते हैं, water absorb करके we know they send it to the xylem vessels. xylem में भेजते हैं पानी. So the pressure which is pushing the water towards the xylem is known as root pressure. Okay. Now exactly क्या हो रहा है? Root pressure अगर नहीं होगा तो anti gravity पानी ऊपर कैसे जाएगा? See, understand. Roots पानी को नीचे से ऊपर भेज रहे हैं. तो नीचे से ऊपर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा एंटी ग्रेविटी प्रेशर की ज़रूरत है. कुछ सक्शन फोर्स की ज़रूरत है. तो ये सक्शन फोर्स जो ऊपर भेजने में हेल्प कर रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट रूट प्रेशर. सो रूट प्रेशर इज एक्सर्टिंग नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रेशर, सो दैट व्हाट हैपेंस फोर्स, सो दैट व्हाट हैपेंस वाटर मॉलिक्यूल्स रीच अपवर्ड्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. So this was root pressure. You can simply define root pressure as the pressure created in the roots, so that pressure created in the roots in the xylem to the xylem which pushes the water upwards is known as root pressure. Root pressure is directly dependent on transpiration, which is the next topic that we will be studying. So plant is basically having different types of forces and pressures which allows the water and minerals to push upward. We have done ascent of sap, if you remember. Ascent of sap, that was upward movement of the sap. तो वो upward movement of the sap कर कौन रहा है? Root pressure. So root pressure is technically not a big term to understand. It is a very simple term. कि कुछ नहीं, roots जो pressure exert करते हैं पानी ऊपर तक push होता है. Nothing much. Okay. So this was the first type of pressure. Okay, let's understand transpiration. See, basically we can define transpiration as loss of water vapor through the aerial parts of the plants which part is this aerial part? That part is stomata, is known as transpiration. Okay, now before making you understand about transpiration, I'll just explain you exactly क्या होता है. See, in the structure of the leaf there is an epidermal layer जिसमें epidermis cells है. सबसे पहला ये leaf का structure है ड्राइंग. उसके बाद there are mesophyll cells. These cells are called as mesophyll cells. Mesophyll cells के नीचे there is spongy mesophyll cells. Okay, now there is space over here, and before the lower epidermis starts, like the lower epidermis के वहीं पे बीच में, here there is a type of cell. Here are guard cells present. This cell, this cell is known as stomata. How will you define a stomata? Stomata are tiny pores present on the lower epidermis of the leaf and guarded. They are covered with guard cells, kidney shaped guard cells. Now when this stomata opens, water droplet is released out in the form of water vapor, gas form.
by the process of diffusion, if you remember. ठीक है, so this process is known as transpiration. Transpiration basically creates transpirational pull, that is the pull which is being exerted by the upper parts of the plant so that the water is sucked up. This is suction force created. ट्रांसपिरेशन होते रहेगा, पानी ऊपर से लूज होते रहेगा, तो नीचे से रूट प्रेशर का पानी ऊपर आते रहेगा. ऑल्सो इट इज ट्रांसपिरेशन विच मेंटेन्स एडेशन एंड कोहेजन. नाउ एडेशन क्या होता है, that when the water molecules are traveling upward they stick to each other and move up. वो kindergarten के बच्चे कैसे straight line में चलते हैं, that is adhesion. And cohesion is when the children are going ahead they are also sticking to the line. मतलब अगर ये जाइलम है तो जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर जा रहे हैं तो वो जाइलम के वॉल को टच करके जा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कोहेजन. और वो एक दूसरे को टच करके ऊपर जा रहे हैं, दैट इज नोन एज एडेशन. सो ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेशन, कोहेजन, and as I said it is also because of the transpirational pull. Now what is the importance of transpiration? See, it basically provides cooling effect to the plant. क्या होता है, बहुत गर्मी के टाइम पे आजू बाजू में जब एनवायरनमेंट बहुत गर्म हो जाता है तभी प्लांट स्टार्ट्स रिलीजिंग दिस वाटर वेपर. अब हम भी अगर प्लांट के वहाँ पे जाए और वाटर वेपर रिलीज होना स्टार्ट हो जाए तो वी वुड ऑल्सो फील वेरी गुड दैट अरे मस्त एकदम ठंडा फील हो रहा है. दोपहर के टाइम पे इसीलिए लोग प्लांट्स के नीचे जाके बैठते, ट्रीज के नीचे पहले जाके बैठते थे, बिकॉज शेड में इट्स क्वाइट कूल इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस. So this is one significance that it basically maintains the cooling effect, it provides the cooling effect. Then the other basically importances are it also helps in transportation of food materials. जब भी फ्लोएम से फूड ऊपर जाता है और ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है जिसकी वजह से फूड रिड्यूस होता है एंड यही वाटर वेपर के साथ साथ फूड इधर उधर ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है. ओके, व्हाट एल्स, इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी. वो जो सैप है ना वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ना हो या ज़्यादा डाइल्यूट ना हो. क्यों? क्योंकि वाटर वेपर से ही डाइल्यूजन या कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड होता है. Not a such detailed concept, even if you read it point wise you will understand. So these were the significance of transpiration. Now we shall understand what is the factors that are related to the rate of transpiration. Not the factors. The factors responsible for the rate of transpiration is first sunlight. See, when there is extreme sunlight, the stomata would open. So ज़्यादा देर अगर stomata open होगा तो ज़्यादा transpiration होगा. So increase in sunlight would lead to increase in transpiration. The next factor is humidity. Humidity मतलब moisture. So when there is more amount of moisture, हवा में अगर नमी है, पानी है, तो हवा ऑलरेडी मॉइस्चर वाली है तो वो और वाटर वेपर को पुल ऑफ नहीं कर पाएगी. So if there is more humidity, there is less transpiration. Okay. The next one is temperature. If the temperature is high, transpiration will also increase. अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो water evaporate ज़्यादा होगा. The next is wind, velocity of wind or wind. If the speed of the wind is more, अगर हवा ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, हवा के ज़्यादा आने से फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ द लीव्स होगी. तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लैपिंग मूवमेंट, इफ द वेलोसिटी of
wind is more, rate of transpiration will increase. So I hope the factors which affect the rate of transpiration are absolutely clear. Okay, other than this, there are sometimes factors like pressure as well, but it is not mentioned, so we would not go into detail. Chalo, let's understand the relationship between transpiration and absorption. Now, there is a direct relationship. ऊपर से ट्रांसपिरेशन होगा तो नीचे से रूट प्रेशर क्रिएट होगा और रूट का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. So there is a very direct relationship between the rate of transpiration and root से water absorption. जितना ज़्यादा water absorption उतना ज़्यादा rate of transpiration. ठीक है. So with this we've completed transpiration, उसका mechanism, उसके significance, उसके factors. Now we will be going ahead with the topic that is nutrition, importance of minerals in the plants. See, minerals are very much important in the case of plants. If we see, minerals have their own ability to provide different functions to the plant. Like plant requires iron, magnesium, calcium, so many different types of minerals to sustain, to provide different functions. Now in your textbook they have given minerals ka ek table, and they have also said that what are micronutrients and what are macronutrients. See, minerals are, it could be of two types. Macro, which are required in large quantities, and micro, which are required in minute quantities, tiny quantities, also called as trace elements. Now there are many minerals which are basically macro essential nutrients like nitrogen, phosphorus, magnesium, potassium, calcium, sulfur, and micro may we have iron, zinc, manganese, copper. As I told you, macronutrients are very much essential for the plants, and micronutrients are required only in small quantities, thus trace elements. Now we have tables for the role of the, like what is the region of the plant जहाँ पे वो needed है, what is the role basically that they play in the plant, and major deficiency of the symptoms. ठीक है. Now what we will do is we will just take a reading to that what do we say deficiency के हिसाब से कौन सी डिजीज की ज़रूरत, कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन से न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी से. We'll just take a look. Okay, we just start. Okay. Importance of the minerals. Nutrient elements, minerals, are essential for the plants to grow well and complete their life cycle properly. As I told you, minerals are absolutely essential. The nutrient elements are divided into two broad categories, that is macronutrients, which are required in large quantities, and micronutrients, which are required in small quantities. All of the nutrient elements are obtained from the soil itself. In fact, soil is the storehouse of minerals. But sometimes there are places जहाँ पे soil में minerals की कुछ कमी होती है. तब जब minerals की कमी हो जाती है, at that time plants have to face deficiency disease. Some of the macro and micronutrients, their occurrence in the plants and their deficiency symptoms are given in the table below. There are several other deficiency diseases under each category which are beyond the scope of the syllabus. So there is we will only study the nutrients which are mentioned in your textbook. Chalo, let's start. First one is macronutrients. The very famous NPK combo, NPK trio, I must say. Nitrogen, phosphorus and potassium. Very essential set of nutrients. Now, what is the major role of each in the plant? Nitrogen, it is the major constituent of all the proteins. See, proteins are the building blocks of our body. So, जितने भी proteins बनते हैं वो नाइट्रोजन की मदद से ही बन सकते हैं. सॉइल से नाइट्रोजन अब्जॉर्ब होगा, उससे प्रोटीन प्रोडक्शन शुरू होगा.
तभी सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो भी सेल मेकिंग प्रोसेसेस है वो शुरू होंगे. नाउ व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम? येलोइंग ऑफ लीव्स, द लीव्स वुड टर्न येलो एंड रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स, जितनी भी ग्रेन्स है ना वो रिंकल होने लगेंगे. रिंकल मतलब क्या? मुरझाने लगेंगे. Phosphorus, constituent of the cell membrane and the certain proteins. Phosphorus ज़्यादातर सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. सेल का मेम्ब्रेन इज सेल का आजू बाजू का लेयर. Deficiency would lead to purple and red spots on the leaves, delay in seed germination. धीरे धीरे करके seed germination would start delaying. Why? Because जो deficiency है वो तो है ही, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है उसमें. Potassium, more abundant in growing tissues involved in the opening and closing of stomata. Poor growth with reduced rate of transpiration. इतना ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है दैट धीरे धीरे क्या होने लगेगा? पोटेशियम की कमी से द प्लांट वुड रिमेन अ शॉर्ट हाइटेड प्लांट एंड नॉट अ वेल डेवलप्ड वन. सारे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएगा. ओके, द नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वी हैव आयरन, मैंगनीज एंड जिंक. फर्स्ट वन इज आयरन. Iron is the main constituent of some proteins, same like nitrogen. It also leaves, the deficiency also forms yellowing of leaves. I said leaf yellow हो जाएगी, chlorophyll नहीं होगा, तो photosynthesis भी नहीं होगा. Gradually plant will die because there is no food. Next is manganese. It is the main constituent of some enzymes. Yellowing of leaves with grey spots. लीफ के ऊपर ग्रे कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज जिंक, कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स विच एक्टिवेट्स एंजाइम. जिंक कुछ कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से, नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट which helps in speeding up the reaction. रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं एंजाइम्स. ओके, नाउ अगर एंजाइम्स नहीं होंगे, प्लांट्स के हार्मोन्स नहीं होंगे, तो प्लांट का ग्रोथ सही होगा? नहीं. सो व्हाट वुड हैपन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक? डी शेप लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ. So I hope you have understood. Stunted matlab short. So I hope now you have understood that what is the deficiency and what would it affect. Okay, we've completed factors, we've completed the importance of transpiration, uses of water in the plant. We'll just give it a reading to it. The water absorbed by the roots is important for the plant in three main ways. First is transportation, second is food production, and third is cooling. Transportation. The food in the plant body, both in the xylem and the phloem, transport substances in a solution form from one part to another. What solution is this? Do you remember the name? Cell sap. Sap के फॉर्म में खाना, minerals and water एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Next is food production. Water is required for the process of photosynthesis. It combines with carbon dioxide in the air in the presence of chlorophyll and sunlight and provides glucose. Next is cooling effect. The heat utilized when water is transpired from the surface of the leaves is in the form of water vapor, which induces a cooling effect. Okay, now there is a short activity which I would read. You must have experienced that standing under a tree. I just told you this कि झाड़ के नीचे खड़े होते हैं तभी क्या हो जाता है? बहुत अच्छे से cooling effect create होता है. Why? Because of the same thing. Cooling effect is the basic reason behind this process कि ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर वेपर बाहर आते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग कूल. ओके, नाउ दे गिवन अ कूलिंग ट्रांसपिरेशन का एक एक्टिविटी जिसमें एक पॉटेड प्लांट को प्लास्टिक बैग पहना दी है. तो उससे क्या होता है? थोड़ी देर के बाद जब वो प्लास्टिक की थैली निकालेंगे तो अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे. समथिंग लाइक दिस. देयर इज अ पॉटेड प्लांट, उसके ऊपर बैग लगा दी है. After some time, when you would observe, you would see there are water droplets inside the bag.
वाई? बिकॉज लीफ ने ट्रांसपिरेशन किया और वाटर वेपर condenses to become water droplets. This is what is explained in the experiment. Okay, I hope you have understood. What is the conclusion? The conclusion is plant does transpiration. Chalo, we've completed the chapter. Now what you can do is you give it a good reading to the chapter, start learning as soon as possible, and stay safe. Bye bye.